So here we will be restoring this TVS Victor, and all the videos will be coming in 5 or 6 parts. Let's start the video. हेलो दोस्तों, आप आज TVS विक्टोर GLS विद डिस्क वाली बाइक की मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसको हम पूरी स्क्रैप से उठा कर लाए हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। इसके बिफोर और आफ्टर शॉट्स मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा, और इसकी कंडीशन ज़रा आप गौर से देखिएगा, क्या हालत है इसकी। हम बस कोशिश करेंगे इसे कुछ एक अच्छी सी रूप देने के लिए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप देख सकते हैं इस बाइक की कंडीशन पूरी की पूरी कबाड़ हो रखी है। स्टार्ट भी नहीं होती, चाबी भी गुम हो गई है। ब्रेक की कंडीशन आप देख सकते हैं। आगे की ब्रेक को देखिए दोस्तों, पूरा कचड़ा हो चुका है। आगे का पार्ट पूरी तरह से ख़त्म है। बस इसके आगे के टायर से ही है। क्या हालत है इसकी, आप देख सकते हैं। इस बाइक को हम पूरा रिस्टोर करेंगे दोस्तों। तो चलिए, बने रहिए अपने वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आप देख रहे हैं रिवैम्प आर्टिस्ट्री की ये वीडियो। तो आगे आप देखने वाले हैं TVS विक्टर एज की सारी डिसअसेंबलिंग और थोड़ी बहुत फ्रेम का कट, और हम इसको केरोसिन से भी धोएंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे देखिए और हमारे साथ टाइम लैप्स का मजा लीजिए। थैंक यू।
पे आप देख सकते हो हमने पूरा केरोसिन मार के लिया है सारा बॉडी पार्ट्स, जो कि पूरा रस्टेड है। तो हम बाद में इसे क्लीन करेंगे, अभी बस इसे केरोसिन अप्लाई करके छोड़ेंगे। आप बस हमारी टाइम लैप्स का मजा लीजिए। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Hope you guys wait till my next video. Till then, like, share, subscribe my video. Thank you. आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।